Hi, folks. Hi, good afternoon. Guys, as you know, this is probably the last step towards a placement, right? Uh, so we do this session because one, the placement season is just starting this week itself. So I wanted to have a conversation on how to one कि अभी क्या expect करना है. Two, I want to also spend time on how do you build your resume, right? Some of you would have already done it, but there are some do's and don'ts that I want to not just do and don't, but कैसे किक-ass resume बनाना है, right? So that's something that I want to share because of my learnings. मैंने बहुत सारे resume देखे and I think that some of these learnings will be very useful to you. तो प्लेसमेंट सीजन आ रहा है दोस्तों एंड as मतलब most of you are in college so you would know कि स्ट्रेसफुल टाइम होता है, ठीक है. तो इससे पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ, ठीक है. that in during the next month or two, right, be patient. Okay, patience बहुत जरूरी है. Some of you will find jobs probably in the first week, some of you will take a month, some of you will take 2 months. It does not reflect on how good or bad you are. ठीक है, पेशेंस से काम लेना है. Even the best candidates find a job much later in the season just because they want मतलब कि कुछ companies पे नहीं हो पाता है, their expectations are higher, companies are not meeting their expectations, etc. Right? Multiple reasons. So disheartened नहीं होना है कि अगर हमारा पहले महीने में ही नहीं हुआ है, right? It takes time. I've seen very good candidates. They'll have to उनका for some reason beyond our control कि हमने resume भी परफेक्ट है हमारा interviews भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, but again we are not able to crack those मतलब the final round of interviews, right? It happens. So disheartened नहीं होना है, be patient, right? Companies will keep coming, right? There are a lot of companies that we work with, so वो लोग companies आती रहेंगी. आपको disheartened नहीं होना है कि अगर पहली बार में नहीं हो रहा था, right? What we need to do is कि take. So there's one thing that you should do is that take feedback, right? Feedback मिलेगा, उसको improve करो, उसको next round में use करें, ठीक है? You guys would have done a lot of mock interviews. We will keep doing mock interviews, right? We will keep working with you. But for every company, there is a specific learning that you need to do. उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है? I'll come to that. The way the process will work is that some of you might know that when a company comes, there is an opt-in process, right? So the company will come, share their details on location, CTC, the kind of work, etc., right? And you will get a form. You'll get a Google form. आपको opt-in करना है. If you like the company, if you want to apply, then you opt-in. Otherwise, you don't, right? So that the company, us and all, everybody's on the same page that, yeah, this is the company that somebody wants to apply for, right? एक मैं आपको स्टैंडर्ड नंबर देना चाहता हूँ. ऑन एवरेज आपको बताओ एक जॉब क्रैक करने के लिए कितने इंटरव्यूज देने पड़ते हैं ऑन एवरेज, इफ इट्स अ गुड कैंडिडेट. आई एम नॉट सेइंग बैड कैंडिडेट. इंडस्ट्री वाइड ऑन एवरेज 15 interviews, 15 interviews people have to give to get a job. Okay, 15. तो नंबर ध्यान में रखना. Some people will fall below that 15, some people will fall above 15, right? हमने कोशिश करी है कि ये नंबर कम हो जाए, ठीक है, बट ये नंबर ध्यान में रखना बिकॉज इतने देने पड़ते हैं अगर अच्छी जॉब क्रैक करनी है तो, राइट? सो इट्स ओके टू टेक, अगर टाइम लगेगा तो, ठीक है. जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट आउट, राइट? एक मैं ना लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ. व्हेन वी स्टार्ट, सो जब हम इंटरव्यूज के लिए जाएंगे, राइट, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कंपनी, राइट? उस कंपनी के बारे में तैयारी जरूर करके जानी है, ठीक है. सिर्फ कंपनी की वेबसाइट देखने से नहीं होता है, राइट? हम क्या करते हैं, वेबसाइट देखते हैं, हम समझ लेते हैं बिजनेस क्या है, ठीक है. One, we should understand what they do, right? Big companies, PTMs, Just Dials, and big companies you would know, right? But some companies that you don't know, right? Google them, ठीक है. और एक अच्छा ट्रिक होता है कि आप Google सर्च में न्यूज वाले टैब में जाना, write the company's name and go to the news tab. So you will know what is the latest that has happened in that company. Okay, will give you a good insight on what are they doing, right? So go through that article. Typically news articles mein they write a lot about what the company is doing, right? One, of course, you go to the company page, but also go through that article page jahan news mein aayega, right? And if you know the name of the interviewer, right, उनके बारे में पहले पढ़ के जरूर चले जाना, ठीक है. मतलब हमें ऐसे नहीं करना है कि सर आपका करियर बहुत अमेजिंग है, you know, वो सब नहीं करना है, but you should know what this guy's background is, right?
you will be able to prepare better, right? So as much background research that you can do before an interview, do that. Okay, will help you in having a better conversation in the interview, right? See, you will be judged in multiple things. One is your technical abilities and technical knowledge, right? जो आपकी अच्छी है, right? Second will be, you will be judged on how you will be, मतलब can you communicate your ideas, right? आप अपने आइडियाज को समझा पा रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट थॉट को बता पा रहे हो. थर्ड, वो थोड़ा कल्चर फिट देखते हैं, राइट? कि आर यू एबल टू जेल वेल इन द कंपनी एटसेट्रा, राइट? इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, ऑल ऑफ दीज थ्री बॉक्सेस आर चेक्ड, राइट? टेक्निकल एबिलिटीज तो आप दिखा ही दोगे, बट जो हमारी ओवरऑल नॉलेज है, राइट, वो दिखाना जरूरी है. सो मतलब टिपिकली कंपनीज विल अप्रिशिएट पीपल जिनको इंडस्ट्री की ओवरऑल नॉलेज है, राइट? अगर आप लेट्स से यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन ब्लॉकचेन, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन सर्टेन प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स प्रोडक्ट में नई नई क्या चीजें आ रही हैं, व्हाट आर द कंपनीज डूइंग, राइट? अगर आप किसी फिनटेक कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, देन थिंक अबाउट कि वो फिनटेक कंपनी में, फिनटेक में क्या चल रहा है, राइट? लेट्स से उस कंपेटिटर ने क्या किया. तो अगर आपको दुनिया की नॉलेज है along with what you and you're good at in your technical area, तो it just adds value, right? तो एक little bit of research for about half an hour, 1 hour, right, goes a long way, right? ये करना जरूरी है. ठीक है. हाँ, so relevant news पढ़ना जरूरी है. और एक मैं लास्ट चीज बोलना चाहूंगा कि अभी basically we would have prepared for a lot of questions on tech interviews, right? You guys also have non-tech interview questions, I'm assuming, right? Now, see, even if you're, some people have very good communication, वो ना on impromptu बहुत अच्छा बात कर पाते हैं, right? कि आपको आप उनसे कभी भी किसी टॉपिक के बारे में दो तो they'll start talking about it, right? But what typically happens is when you are given questions, in the interview, एक तो वैसे से नर्वस होते हैं, राइट? और हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता है. सो अ गुड थिंग दैट आई वुड रेकमेंड, स्ट्रांगली रेकमेंड, इज कि आपके जो नॉन टेक आंसर्स होते हैं, राइट, जो एचआर क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, राइट, उनको मग अप कर लो, मतलब याद कर लो, राइट? नॉट द बेस्ट वे, बट इफ योर कम्युनिकेशन इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग सूट, राइट, कम्युनिकेशन आपको लगता है कि मेरी एवरेज है, then learn those answers, right? Type it out on a Google Word document and learn those answers, right? अब होगा ये कि फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन आएगा जो किसी भी तरह से आ सकता है. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, राइट, व्हाट आर यू प्राउड ऑफ, व्हाट टीचर्स वुड से अबाउट यू, राइट? ये चारों चीजें मैं आपको एक पॉजिटिव या एक दो पॉजिटिव चीजें बतानी है, राइट? उस आंसर को आप, सेम क्वेश्चन है, but the same answer can fit into these 3-4 questions, right? So if you have that one piece of story, that one piece of answer, then you can use it in multiple areas, right? एक strength के ऊपर, एक weakness के ऊपर, एक question आता है कि where you have to work really hard to achieve something, right? कि आपने effort मार के ये करा, ठीक है? इससे क्या दिखाई देता है? इससे दिखता है कि आपकी learnability अच्छी है, आप मेहनत करके सीख सकते हो नए टॉपिक को और उसमें अप्लाई भी कर सकते हो, राइट? So think from your past experiences, think of those 4-5 stories, ठीक है? और उनको लिख लो, stories को लिख लो, and you will be able to use them in some of these questions, right? If somebody comes to you in the interview, why do you think you are better than others? बहुत typical question है, right? तो एक आप आंसर क्या दोगे कि यार I think I can adapt to new learnings very well, ठीक है? अब वो क्यों है? Because this happened in my life, because of so and so happened, and that's why I'm able to मतलब confidently say that I will do better in this, ठीक है? इसमें टिपिकली आपको ये बोला था कि मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बस मैं अपने बारे में कुछ पॉजिटिव बता सकता हूँ, ठीक है? एंड देन यू टॉक अबाउट 2-3 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना होता, हमेशा पॉजिटिव टोन में ही इसको इंटरव्यू को रखना होता है, ठीक है? So these 3-4 instances, if you've realized, so one is your function of learning, right? One, if you really have worked over and beyond your function project में वो रखो. एक कॉलेज की स्टोरी हो सकती है, ठीक है? और एक कॉलेज में 1-2 स्टोरीज हो सकती हैं, which will typically tell you about
एक वो स्टोरी से ना एक आपकी एक स्ट्रेंथ निकल के आनी चाहिए, राइट? एंड just ensure that you've written that story well. Okay. uh, yeah. So these are some things that I thought I would tell you before this thing, right? One more thing, a lot of rounds of interviews will be live coding. Okay. Now every company has got the smartest tool available in the world, right, to track if somebody is cheating or not. वो आपकी eye movement track करते हैं, वो आपके screen tap track करते हैं, right? They track the जो code reviews है by multiple people and they match it with each other, right? Do not cheat, right? It is okay to be मतलब original and be average, but don't cheat. Cheat करने से ना बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, right? And what happens is the company doesn't come back again. And we've had instances where people have copied each other's answers and we've had to, the company didn't interview. So आपने अपना ही खराब करा, बाकी 3-4 लोग जिनकी प्लेसमेंट हो सकती है उनका भी अपॉर्चुनिटी खराब हो, right? So we'll not do that, right? I've been told that you are like the smartest bunch of radon. So I'm assuming that you guys will not be doing, right? ठीक है. अभी तक कोई, चलो ठीक है, what we'll do is questions एक बार साथ में लेंगे एंड में. Okay. I'll start with the resume building session. ठीक है. इसके लिए I need to present my screen, right? Give me a minute. ठीक है. So what I'll do is I'll quickly share some of the resumes that मतलब एक standard resume हमने template बनाया हुआ है. ठीक है. अगर आपने use this template, अगर आपने पहले कभी resume नहीं बनाया, if you feel that this is the template that I will follow, right? If you feel that you can build a better template, right? अगर आप और effort मार के better करना चाहते हो, right? There's a website called Novo Resume, right? Which you could use, which will I'm going to put it on the chat. Right, you could use this. इससे आप अगर आपको बेटर बना सकते हो, ठीक है? बट लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड अ रिज्यूमे. ठीक है, कुछ फंडामेंटल्स के बारे गिव मी 1 सेकंड. या कुछ रिज्यूमे फंडामेंटल्स पे बात कर लेते हैं. Okay, you can see my screen, correct? Yes. Okay, so I'll tell you typical areas of the resume section, right? ये आपका email. So email will keep as placement@functionup.org because that's the common area where every company is this thing. Put your LinkedIn profile, put your GitHub link, right? We will keep your experience, your FunctionUp experience in experience, okay? इसी तरह लिखेंगे, which is backend developer training, ठीक है? October and ये present, ठीक है? Give me 1 second. Okay, I'll be back. Give me 1 second. Oh, sorry. So let me share this again. Okay, so first important thing about resume is your dates. Okay, dates need to be in reverse chronological order. Reverse chronological order समझते हैं?
कि अभी से लेके पीछे जाते हुए, राइट? सो मोस्ट रीसेंट फर्स्ट, देन पुराना, राइट? सो सो जो आपका लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर आना चाहिए, राइट? इफ योर एजुकेशन इज लेटेस्ट देन एजुकेशन ऊपर आ जाता है, बट योर वर्क एक्सपीरियंस इज लेटेस्ट, तो दैट विल कीप यू, ओके? सो एक्सपीरियंस हम इसको ऐसे लिखेंगे, राइट? फंक्शन ऑफ बैकएंड डेवलपर ट्रेनिंग, एंड डेट्स मेंशन करना जरूरी है, ओके? Anybody who's seeing your resume, it's a myth that people look at like for 5 seconds, etc. नहीं, people will spend time on your resume. ये ध्यान रखना, ठीक है? People will go through it. The companies that we talk to, the HRs we talk to, they will spend time in reading your resume. Okay, so make it in a way that you know it is detailed. ऐसे skim through नहीं करना. Okay. अब इसमें basically dates mention करना जरूरी है, right? We also, so we are going to share this sample resume, right? But here you will mention what all technologies that you've learned, right? किन किन projects पे काम किया है, and anything which stands out, right? For example, अगर आपका TA-ship आपने किया है, तो then you can mention here, right? अगर आपने parallelly कोई coding competition से part लिया है, so during the last 4-5 months जो आपने चीजें करी हैं, that you mention here, right? उससे पहले when if you are with a work experience, right? Mention the company, right? Mention the role and the company and the time that you've been there, right? इस केस में I will so basically एक मैं यहाँ पे वो देना चाहूंगा हिदायत, और मतलब the way that you should portray your prior work experience, right? See, we are all going to be applying for a technical role, right? हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रोल की बात कर रहे हैं, राइट? सो if your previous experience is in sales or in some other area, right, try to show the technical part of that role and not the exact role, right? अगर आपने सेल्स करा तो just don't say sales, right? Think about, थोड़ा सोचो कि उसमें से टेक्निकल एरिया क्या है, कि आपने सेल्स प्रोसेस को इम्प्रूव किया, या सेल्स टेक्निक्स को आपने बढ़ाया, यू ऑटोमेटेड सम ऑफ द ऑपरेशंस व्हिच आर इन सेल्स, राइट? सिमिलरली अगर आपने कोई और रेलेवेंट काम किया है उस रोल में, तो उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट डालने की कोशिश करो, ठीक है? रादर देन जस्ट पुटिंग इट एज इट इज, राइट? Because what we want to do is we want to say that you know you've had a journey of learning some technical this thing, and then finally आपने एक extensive course किया है, which is why you're ready to do this, right? Because people will ask questions on prior experience, right? They might ask you know why you moved from here to here, right? तो आप बोल सकते हो कि I was more interested in technical aspects of things, right? And I started learning coding on my own. I got interested and I hence joined function, right? ये आप चीज बोल सकते हो उसके बाद. One more thing, if you have a year gap, right, or if you have some time which is not inexplainable, उस पे questions आएंगे, ठीक है? Don't think कोई नहीं पूछेगा. Assume everybody will ask that question. Have an answer prepared for it, right? Have a logical answer prepared for it, right? That answer should not reflect कि you were probably not doing anything or being lazy, right? आप कहीं पे कुछ ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ, that is okay, right? And on the side you were doing this, which is okay, right? But these questions will come, उसके answers आपको पता होने चाहिए, prepare कर लो, right? If for example, if let's say you were just preparing for UPSC, right? तो आप बोल सकते हो कि I was preparing for UPSC, right? But and the side what I was doing, I was trying to work on this internship, right? Or not internship, right? So मैंने 2 साल सिर्फ UPSC पे काम किया. But अगर आपने कहीं पे काम किया है, right? या कुछ भी आपने प्रोडक्टिव किया है, then highlight that, right? यहाँ पे I'll come back to questions on each one of you, right? आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखना है, but typically try to show the technical aspects of it, ठीक है? अब क्या है कि आपकी from your college till now story clear होना चाहिए, right? कि what happened, college के बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, now you're at function, right? What happened in between? That should be clear. Okay. Then next what we'll do is we'll mention projects, right? In these projects, so here it's 3. I think you've done 5 projects, 5 or 6 projects. So आप उनके बारे में लिखना, ठीक है? The projects, that the way you'll write it is project name, ठीक है? आप उसको GitHub link दे दो. Role आप actually अगर आपको लगता है कि हर एक में रोल देना जरूरी है तो ठीक है, नहीं तो what you could do is you could skip it, just write it in one. Details of the project लिख लेना, ठीक है?
मैं एक सैम्पल रिज्यूमे दिखाता हूँ. 1 second. I'll show you a sample resume of Mayank. He's an old student. Okay. 1 second. This screen. इसको कैसे share करें? Okay. So he's an ex-student from our first cohort. So see, he's written it creatively, which is that created a complete e-commerce website backend using APIs. ठीक है. इसमें देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा on the content of these things, right? I'll come back to what kind of content do we write. Okay. Isme, so he's written that what exactly this thing does and the kind of libraries and tech he has used, right? Similarly, if you use certain library, if you use something very special which is not, then you should mention it here, right? Crude operation use करे हैं और ऐसा है, ठीक है. अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना. So URL shortener project में what is written is he's mentioned like Bitly, right? So any project that you do and you're able to draw a comparable, right? कि Bitly में Bitly जैसा है, so people are immediately able to see अच्छा what you've done, right? Similarly, if you've let's say if you do a book management system, right? You can compare it to the backend system of Goodreads, right? And then you can have a conversation on Goodreads से कैसे compare होता है. Goodreads के recommendation में जो data use होता है, आप भी वो अपने database में use करते हो. So the system that you have built can actually be scaled to build a Goodreads recommendation engine, right? वो conversation आप कर सकते हो. It's good to have some of these comparables put in. ठीक है. I will not give you the exact names of comparables, right? I would want you to do the research and do it, right? Otherwise, अगर मैं कुछ ही spoon feed कर दूंगा तो then आप will not be able to do this. मतलब आप खुद से नहीं कर पाओगे. ठीक है. Then education पे आ जाते हैं. 1 second. Okay. एजुकेशन पे आ जाते हैं. सो कॉलेज नेम, डिग्री, स्पेशलाइजेशन एंड जीपीए लिखना if it's good. Okay, if you are above 70 plus 77 plus तो सी जीपीए मेंशन कर देना, right? You can write about a project which you have done, okay, which you really want to highlight. अगर नहीं highlight करना that's okay, right? You can write college name, this and your year, right? Then you write school name. Typically 10th or 12th के marks लिखो if they are good, right? And write the year, right? You can mention school name this and you can mention the subject which is science or commerce, right? So you could do that. Okay, so this is this. Soft skills की एक section है, ठीक है? Okay, before that I'll come to these two sections. One is skills, right? This is something that you would have learned here, right? Secondly, if you have learned from other areas, right? अगर आपको लगता है कि मैं C++ में बहुत ही fantastic हूँ, right? You can mention it here. But expect people to interview or ask you questions on these skills, right? अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो किसी चीज पे कि मेरे को आधा दूर आता है तो मत लिखो, right? But if you know something, right, that you have experienced, because इस पे questions आ सकते हैं. अगर आप जावा की कोई लाइब्रेरी के बारे में लिख रहे हो या फिर आप रिएक्ट लिख रहे हो, राइट, तो रिएक्ट पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? बहुत डीप में नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट अगर आप लिखते हो बेसिक्स ऑफ रिएक्ट लिख रहे हो तो बेसिक्स ऑफ रिएक्ट पे पूछा जाए, ठीक है? और अगर आपने कोई और चीज लिखी है तो एंड देन यू हाईलाइटेड दैट यू नो दिस टेक एंड देन ये स्किल में ऐड होता है, बट बी प्रिपेयर्ड टू बी आंसरिंग इन दीज टेक्नोलॉजीज, ठीक है? करा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? एक ये सेक्शन है हमारा लीड कोड रैंक और एल्सा आप स्कोर का, राइट? सो बेसिकली इफ यू हैव, और यहाँ पे आप और भी कुछ लिख सकते हो, राइट? अगर आपका कोई कैट का स्कोर है तो, ठीक है? दिस विल हाईलाइट दैट आपकी मतलब कंपेटिटिव एरिया में आपने कैसा परफॉर्म किया, right? Lead code is one area. Lead code is a platform for competitive computing, right? Competitive programming. CAT में अगर आपने कुछ दिया है या फिर कोई आप कोई अपना
प्राइज या कुछ हाईलाइट करना चाहते हो तो यू कैन डू हियर, राइट, which essentially will differentiate your candidature from somebody else, right? I missed one section which is achievements. ठीक है, अचीवमेंट्स का एक मैं रूल ऑफ थंब बता देता हूँ. अचीवमेंट का रूल ऑफ थंब टिपिकली रहता है दैट you anything that you've done at a above school level, right? इंटर स्कूल में किया है या उसके ऊपर किया है तो लिखो, right? अगर आपने विद इन स्कूल किया है तो probably not. If you've represented your school, college somewhere, it's a good enough to be written in achievements, right? If you've written any extracurricular, co-curricular, तो वो भी लिख सकते हो, right? But if it's very, तो आपको लगता है कि यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, then don't write it because some people would have written like a bigger this thing, right? तो ये ठीक है. Okay. Okay, and lastly these soft skills, right? अभी soft skills ऐसे मत लिख देना, just copy paste मत करना. We will give you a list of soft skills that you think are relatable to you, ठीक है? Ideally सोच समझ के लिखना है कि यार लीडरशिप है या नहीं है, ठीक है? अब आप लिखते हो यहाँ पे एनालिटिकल लिख देते हो, राइट? समबडी मतलब किसी को दिखता है कि यार एनालिटिकल क्यों बोल रहे हैं आपको, राइट? कोई अपने आप को इनोवेटिव बोलता है, कोई अपने आप को मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर बोलता है, ऐसा कुछ बहुत सारे हम. सो विल शेयर अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट यू कुड यूज एज सॉफ्ट स्किल्स, राइट? बट व्हेन यू पिक दोज वर्ड्स, थिंक यार मैं उसके बारे में कुछ बात कर सकता हूँ कि क्यों है वो मेरा स्ट्रेंथ, राइट? या वो क्यों मेरी स्किल है, वो जरूर ध्यान रखना है, ठीक है? एजुकेशन पे बात हो गई, हमारा इस पे बात हो गई. दिस इज वन फॉर्मेट दैट वी विल फॉलो, ओके? ठीक है. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट ऑफ हम कंटेंट में कैसे लिखेंगे, राइट? हाउ डू वी राइट कि हमें बुलेट पॉइंट्स में क्या लिखना है, ठीक है? So what I'll do is I have a few JDs with me, right? Job descriptions. Okay. I want to show you those job descriptions essentially, right? Give me a minute. Yeah. Yeah. So मैं एक sample JD ले रहा हूँ of a company called Field Proxy. Okay. Now we'll go through the JD and we'll try to understand the company's का requirement क्या होता है, ठीक है? The idea is that we keep our CVs as close to the JDs as possible, right? अब job description हमें लगता है कि कुछ भी लिखा है, right? But typically you have to now that you are an experienced professional, थोड़ा सा JD को पढ़ना चाहिए, ठीक है? Your responsibilities, for example, developing, testing, this is what you will have to do on the job, right? थोड़ा generic है, right? But gives you a sense on this thing, right? As a developer, you know that you have to work with designers, product managers, engineering managers, and probably operations people to essentially build the right product, right? You might think out of the box, मतलब कहने को बहुत cliched है, but what happens is a lot of times you'll not have a straight answer to these things, right? So it's a good point. If you've shown कि यार मैंने past में बहुत ही fantastic idea निकाल के एक solution निकाला था, right? It goes a long way, and you're able to tell them that with experience that at this area this was the problem and I was able to solve it this way, right? Typically college के मतलब projects में करते हैं या फिर और कोई अगर आप external काम करते हैं या फिर work experience में चीज reflect होती है, ठीक है? Now let's go through the required skills, right? Coding skills in JavaScript, right? Check, we are able to do that. Proficiency in Merge Stack, Express, React.js,
right? इसमें I think one part is not there, but which is fine, right? आप लोग ने React कितने हफ्ते में have you gone through the React training? Okay, chat is yes, okay, perfect. हाँ, so you will be able to, ये भी सही है ना? So I think we're covering this part as well. Data visualization, charting tools, this I think we have not done, right? So this part, कोई बात नहीं, ठीक है? So 2 out of 3. Thorough knowledge on software development best practices, coding standards, source control, Git पे किया है, right? CI/CD हमने नहीं किया है, but which is fine, right? So half of it this we have covered, right? Written and verbal skills, अगर आप ELSA score करोगे तो that also reflects that you have covered this, right? Ability to learn new technologies quickly, ठीक है? Docker shell scripting थोड़ा advanced है इसलिए हमने नहीं किया है. Ability to learn new technologies quickly, you will be able to say because you by design, because you're coming from function up, you've learned something very quickly and been able to apply it, right? So if you look at it, we've covered most of the areas of this JD, right? And I'm trying to look for some of the key keywords here, right? So for example, merge stack हमने करा है, JavaScript के ऊपर करा है, ठीक है? If you go through other JDs, some of the keywords that you will, ये वाला नहीं है, so I'll go. So what I'll share the JDs with you. I have it somewhere. So इसमें आता है, for example, RESTful API, right? JavaScript के ऊपर आता है, RESTful API आता है. Then there are things which are around what you've done, right? So what we want to do is we have to look at for those keywords which are common in different JDs, and we want to include those in our resume, right? हम 4-5 JD पढ़ेंगे, हम देखेंगे यार ये सारी चीजें बैक एंड डेवलपर को जरूरी हैं, right? I've done that. For example, authentication and authorization is something that people sometimes ask, right? अगर आपको दिखता है कि वो चीज बार-बार आ रही है तो I'll keep it here, right? अगर आपको लगता है कि React.js के ऊपर हमने काम किया है वो बार-बार आ रही है, I'll keep that, right? So in my resumes, I'll highlight things which I see are top skills required in different JDs, right? जो common चीजें आ रही हैं. I will not be able to cover 100% of all job descriptions, right? Or all requirements ever, right? I have to cover 60-70% of most JDs, right? That's the idea, right? So let me open up one more JD, which will give you an example, okay? Okay, so this is the company which I was talking about, Element 5. So these are companies which have come to hire from us, right? And they'll typically be hiring for entry-level roles, right? So यहाँ पे हम देखते हैं. So experience in developing software web applications with JavaScript, tick, right? Express and strong loop, Node.js frameworks available such as Express and Express में हमने काम किया, right? So वो tick. Backend server components हम लिख सकते हैं, right? We have done it. We have written RESTful API services. We have expertise in microservices. So you will see that these two keywords, right, will come a lot of times, right? So when you write about your training, when you write about function up, right, try to mention these things, right? आप कैसे लिखोगे कि worked on creating microservices architecture, right? Using XYZ, right? Created RESTful APIs for projects using so and so, right? एंगुलर नहीं किया है हमने, ठीक है? रिएक्ट किया है तो रिएक्ट जेएस पे हमने जो काम किया है, ठीक है, उसके बारे में मेंशन करेंगे, ठीक है? AWS पे जो हमने काम किया है, सो क्लाउड प्लेटफॉर्म में बेसिकली AWS पे हमने आई थिंक S3 पे काम किया है. वी विल हाईलाइट दैट पार्ट इन दिस थिंग, राइट? S3 पे हमने ये चीज करा है, ठीक है? QA टेस्ट हमने नहीं करा है, विच इज फाइन, राइट?
So again, we are covering 60-70% of the cases with the technologies that we've learned, right? With the skills that we already have. So we'll highlight these, right? A company has Zigsaw, right? JDs will be very similar for companies that who are hiring from 0 to 3 years of experience, right? Will be very similar. Again, Node.js, React.js, and एक SQL के ऊपर आएगा, एक database पे question आता है. So if you've done on MongoDB, right? You highlight that MongoDB वाला जो आपका technique है. How do you write in a sentence? I'll leave that to you. ठीक है. REST APIs हमने cover कर लिया है. ठीक है. AWS में हमने S3 करा है. EC2 और बाकी सब की जरूरत नहीं है at this early stage. ठीक है. 3 points हम cover कर रहे हैं in writing clean modular code. So if you have done anything which follows standard practices of coding, there's this CIRC certification or something that you've done, right? That आपने code की standards को follow करा है, then highlight it. अगर नहीं करा है तो don't put it forcefully, ठीक है? अगर करा है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखा तो कोई बात. Nobody expects the 1 year experience people to be very good in following all coding formats, right? React.js HTML5 हमने करा है, ठीक है. NoSQL हमने करा है, तो हम कह सकते हैं Git पे knowledge है, तो GitHub पे आपने जो भी करा है वो सब तो आएगा ही. CI/CD not needed at this point of time, right? Experience in design thinking. So this point I'll cover very shortly. Okay, most of the companies that you will work for will be product-based companies, right? Which will have users, right? So a lot of time what happens is the thinking of how the user experience will be or how the users will behave on the app is the job of a product manager, right? वो companies इसलिए job product manager रखते हैं कि user experience के ऊपर सोचो, right? But when you bring this practice in yourself, right? When the developers or the engineers start thinking ki, what is the user experience, right? Then it goes a long way, right? For example, if you could say that, I built this library in a way that the time reduced by, let's say 50%, right? Hence improving the user experience, right? And or let's say you said that, इससे क्या होता है कि front end पे load होने में कम time लगता है. Or maybe there are some ways that you've thought about how the user experience will improve, right? कि I did so and so that the end user is going to be very useful, right? उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा experience. That goes a long way, right? Because now because all the product companies are thinking in that way, right? हम बहुत बार क्या करते हैं? In my experience, what I've seen is a lot of engineers focus on that 1% of the problem, right? 99% is the most use case, right? उसको पहले solve करना है. 1% कभी कभार आता ही नहीं है, right? We have to ensure that 99% of the cases, the experience has to be good, right? So not focusing on the last edge cases, but ensuring that the experience of the end user is improved, right? उसको ध्यान में उसको अगर आपने उसके बारे में बात भी कर दिया, right? कि I've thought from that angle that the end user experience is good, it goes a long way, right? So if you if you say that in some of your projects or in some of your work that you've done before to improve user experience, you've taken certain action, right? Product companies को बहुत they appreciate that a lot, right? Because आपने उस तरीके से सोचा गया उसके बारे में, right? Short release cycles, we can't say that, but you've completed projects in 1 week, 2 weeks, right? Typically sprints, that sprints will work in 1 week or 2 week fashion. Companies typically follow 2 weeks, some follow 1 week, startups follow 1 week. So हर एक का different होता है, but you realize that you have to complete certain things in a week, right? फिर वो QA testing के लिए जाता है, फिर वो release होता है. ये मतलब if you've used some of these things तो ये ठीक है. So आगे का is more around मतलब it's not about the technologies per se, it is more about if you've worked in certain environment and so, right? एक logical problem solving एक आता है, right? This typically will be tested in your interviews, right? They'll give you a problem where you'll have to break down the problem कि इसको ऐसे solve करेंगे, then you write pseudo code, then you write the main code, right? So ये आपके interviews वगैरह में test हो.
ठीक है. So these are some of the JDs that, and okay, so यहाँ पे merge stack. So again they have written the skills again, right? REST API पे हमने काम किया, ये भी क्या है. Strong knowledge in DSA, ठीक है. DSA पे questions आएंगे दोस्तों, मतलब be prepared. At least you should have done 300, 200, 300 questions in DSA. Okay. Redux पे हमने touch नहीं किया, but which is fine, right? Don't अभी इतना expectations होते नहीं है, because even with people with 2 years experience, people have don't have so many things in their under their arm, right? Under their belt. So it's okay. ठीक है. So this typically now this gives me one. So this leaves me कि हमें content क्या लिखना है, ठीक है, और हमें structure कैसे करना है, ठीक है. We'll share the resume template with you. इसको में भर के. The problem that you guys have now is that it has to be done today. Okay. आज unfortunately you have to do it today. We have to start sending resumes to companies from tomorrow. Okay. So everybody, you will have to share your final cut, right, today. Ensure that you made it in a way that it is the final version, right? So you will not have a lot of time. We will do one round of review for sure, right? But I expect that all of you to make that first and final cut from your end by today. ठीक है. अगर आपने पहले रिज्यूमे बनाया हुआ है तो गुड, उसको इसमें फॉर्मेट में डालो. अगर आपको ये फॉर्मेट ठीक नहीं लग रहा है, राइट, which we had discussed, this one, right, then you use Novo resume, but do that today and ensure that your resume is built out. Okay. Some do's and don'ts I'll quickly mention. ठीक है. I'll come back to questions. Let me just complete on the last few bits. ठीक है. Last few things that I want to mention. Do's and don'ts. Proper file naming करना है, ठीक है, which is your name, ठीक है, underscore function app underscore CV. That's it. ठीक है. याद करने में, टाइप करने में easy रहता है, ठीक है. 1 पेज होना चाहिए. Unless you have बहुत ज्यादा experience है तब भी मुश्किल होता है, but 1 page. I think most of the things that you want to mention at this stage of your career, you can mention in 1 page. अगर नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है, then in exceptional cases you do it 2 page, but ideally 1 page resume is enough. Okay. हमेशा PDF शेयर करनी है, डॉक कभी शेयर नहीं करना है. डॉक कभी आड़ा टेढ़ा खुलता है, different उसमें, and people just, and मतलब people are looking for reasons to reject. Let's not give them any reasons. Right? PDF भेजना है हमेशा जहां भी भेजेंगे. Okay. Star method. हाँ, एक when we are, so one last thing on when we are writing our achievements or accomplishments for a company, ठीक है, एक स्टार मेथड होता है, you must have heard, which is situation, task, okay, action and result. ये सिचुएशन था, ये टास्क आया, ये एक्शन किया, ये रिजल्ट है, ठीक है. इस फॉर्मेट में हमें लिखना होगा. हमने अगर अपना कोई एक्सपीरियंस करा है विच वी वांट टू हाईलाइट, या फिर हमने कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को अच्छे से हाईलाइट करना है, ठीक है. भाई क्यों करा, मैंने ये प्रॉब्लम देखी, मैंने ये सोल्यूशन निकाला, मैंने इसको 1 हफ्ता काम किया और रिजल्ट वाज 10%, 20%, व्हाटएवर इंप्रूवमेंट दैट वी हैड, राइट. सिचुएशन, टास्क, इस फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश करो, ठीक है. आपका पॉइंट बहुत क्लियर आता है, पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है. यार बंदे ने यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, ये करा, ये मचा के ये हो गया, राइट. ये क्लियर हो जाता है. Wherever possible, use star technique, especially अगर आप अपने accomplishments अपने prior work ex में लिख रहे हो तो. ओके. अच्छा, अगर आपकी CGPA बहुत अच्छी नहीं है तो मत मेंशन करो, ठीक है. If that is not, CV में सिर्फ strong suits डालेंगे हम. We'll only put a strong foot forward. हम weakness, मतलब अगर खराब है तो why do you want to show it, right? अगर कोई अच्छे एग्जाम में स्कोर किया, जेई, कैट, जीमैट वगैरह कुछ दिया, अच्छा स्कोर किया, हाईलाइट इट. ओके. It just shows that you've done well in certain areas. Okay. ठीक है. फाइल नेमिंग पे हो गया है. एंड
ठीक है. Last bit I want to talk about is so one will send you the soft skills wala details, a cover letter. ठीक है. Cover letter typically don't think a lot, don't write full page or cover letters. 2 paragraph. ठीक है. पहला paragraph explaining what you are, where your journey currently आप क्या करते हो. दूसरा stating that if you have to write a cover letter, most likely you will not have to write a cover letter, but अगर let's say आपको कहीं लिखना पड़ता है तो second paragraph ये आपकी opening है, these are things what is required, I feel my skills are best suitable for this role, ठीक है, and hence I want to apply for this job, right? और या फिर आपको और भी कुछ relevancy लगती है तो second paragraph में relevancy दिखाओ और connection दिखाओ and then apply for it, right? उससे ज्यादा नहीं लिखना है. हमें बहुत बड़े बड़े cover letters और वो सब नहीं लिखना है, ठीक है. You would have noticed we don't write career objectives and all that, right? We don't write references as of now. We will give them as and when needed. Career objective कभी मत लिखना ऊपर, ठीक है. Contact details में email should be enough, ठीक है. Now, what I'll do is I'll open up to questions, ठीक है. You can type it here, ठीक है, and I will keep answering them, ठीक है. Yes. Add intro or short description in the header. No, never write short description in the header. हम और career objective और वो नहीं लिखते हैं unless बहुत लोग लिखते हैं, मतलब when I've seen it when people have more than 10 years of experience, right, where they want to profile themselves in a certain way, right, then they write it, otherwise not needed. So देखो, if you have a non-tech job, right, before this, ठीक है, then mention it. देखो, gap दिखाने से better है हमें mention करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने ये काम किया है. उसमें कोई technical aspect नहीं है तो मतलब try to bring it, अगर नहीं है तो फिर एक line में उसको sentence में complete कर दो कि this is the part that you did, right, or at least write an accomplishment in that job. Okay, मैं यहाँ पे था, मैंने ये चीज करके ये अचीव किया, कोई अचीवमेंट दिखा दो वहां पे एटलीस्ट. if we are not showing any technical aspect, we should show that we've done well on whatever that we were doing, right? लोगों को लगता है, मिथ ये होती है कि नहीं दिखाते हैं. See, people with experience are valued more, right? उनको लगता है कि corporate experience से एटलीस्ट कुछ आता है, that there's some additional value that you bring to the table, right? If you are experienced, corporate experience में वो value आती है, ठीक है. Not showing is, and showing year gap is absolutely not, मतलब वो तो negative हो जाता है. So show that, and it's okay if you've worked in this thing, that's absolutely okay, but don't skip that part. Yeah, and for जहाँ तक मैंने देखा, it's an added bonus only. आपने अगर वर्क एक्स है ना तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ ही आता है. इट इज ऑलवेज लीव द रिक्रूटर विद अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है. फ्रीलांस एक्सपीरियंस लाइक वर्ड, हाँ, फ्रीलांस एक्सपीरियंस डालो. इफ यू आर अ फ्रीलांसर एंड यू डिड दिस थिंग तो डालो. हो सके तो उस वेबसाइट को अगर वो लाइव है तो वो भी डाल दो, यार मैंने फ्रीलांस में इतना काम किया हुआ. तो एब्सोल्युटली फ्रीलांस एक्सपीरियंस इज गुड, यू शुड ऐड. यू कैन राइट फ्रीलांस साथ में, ठीक है. इन योर ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत वो मत करना. इफ यू वर let's say if you led the team in group projects, etc., you write TA-ship, right? I would say leading a group project will not be a very big accomplishment, right? It will show in your interviews if you've done it, right? We don't need to explicitly put it. TA-ship में आप लिख सकते हो, TA-ship पे आपने इतने स्टूडेंट्स को मेंटर किया, वो that you can mention, ठीक है. यार resumes तो अभी जाएंगे, so you can update it later, right? You can tell Anup and Hariom and everybody else that you updated the resume with skills that you add in the next 1 month. But as of now, we want to send the resumes out, okay? So I would request you guys to अभी जो है उसके ऊपर लिखो, बाद में update करते रहना. That's okay, because you'll keep continuing learning, you'll keep adding, right? Absolutely कर सकते हैं आगे जाके, but अभी जो इसमें confident हो वो चीज.
लिंक्डइन डालना जरूरी है। कुछ पोस्ट नहीं करा, दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू पुट लाइक योर एजुकेशन एंड you that you exist, right? इट्स गुड इनफ। फोटो डाल दो, एक छोटा सा प्रोफाइल, अपना डिस्क्रिप्शन डाल दो, वर्क एक्सपीरियंस, कॉलेज अगर कुछ है वर्क एक्सपीरियंस में आप एज अ ट्रेनी एट फंक्शन आप डाल दो, एजुकेशन डालो, लिंक्डइन प्रोफाइल तो बना लो दोस्त। मतलब दैट आई थिंक इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। शुभम, एब्सोल्युटली मेंशन करो, डिस्टेंस लर्निंग था तो अपने एजुकेशन में डिस्टेंस लर्निंग करके एंड यू वर्कड इन नॉन टेक कंपनी, बिल्कुल मेंशन करो। इट्स इफ यू हैव एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशंस, इट गोज अ लॉन्ग वे। मतलब बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इस चीज का, तो बिल्कुल डालो। ठीक है। Yes, Nitin. So when you do it, so we will review it. So I'll have Hariom have a discussion on who will do the resume review. But एक resume review तो हम करेंगे ही. Okay. Resume review essentially will let us see that एक cursory glance और या फिर एक हम देख पाएंगे कि कहाँ पे कोई grammatical mistakes वगैरह तो नहीं, ठीक है? Yeah, nowadays actually resume में grammar इतना नहीं होता है, but more of formatting, etc. Right? It should not look like an amateur work, right? यार मतलब we go with best foot forward. हम best हैं, best समझ के ही resume बनाना है। आपके resume में अगर formatting की भी गलती है, right? It is not seen कि यार word में ये नहीं हो रहा था। It is your job to ensure that this thing is looking good. It is representable. It is consumable. पढ़ के मैं सारी चीजें समझ पा रहा हूँ. It is your responsibility, not anybody else's. It also reflects a long way कि आप मतलब how do you do your work, right? आपका रिज्यूमे इम्पेकेबल है एकदम, मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं लोग, और फिर मतलब then it shows that you've done effort. It shows in your resume. It shows in your work. It will show in your interviews as well. ठीक है। Yes, resume send करना review के लिए, and if there are changes that we will we'll ask you to update it. 2018 pass out, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन में काम किया है, गुड, you should mention it, definitely you should mention it. Yes, नहीं देखो, एक मिथ होता है कि मैंने बहुत कंपनीज में स्विच किया है। सो आजकल इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट इन अर्ली करियर, आपके शुरू के 2-3 साल में पीपल कीप स्विचिंग until they find a good place to work, right? So अर्ली करियर्स में ओके होता है, लेटर करियर्स में ना जब लोग बहुत जल्दी स्विच मारते हैं तो इट इज सीन इन नेगेटिव लाइट, बट अर्ली करियर्स में इट इज ओके, इट विल नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट यू, राइट? तो आप अर्ली करियर में लिखो 1.5 years, अगर आपने टू डिफरेंट कंपनीज में करा है, एब्सोल्युटली मेंशन इट, राइट? इट विल बी सीन एज अ गुड थिंग, राइट? एंड मतलब कि अल्टीमेटली देखो, अब आप व्हेन यू बिल्ड टेक, राइट, यू विल बी बिल्डिंग इट फॉर अ बिजनेस। कोई बिजनेस होगा, ऑनलाइन बिजनेस होगा, ऑफलाइन बिजनेस होगा, कुछ तो चल रहा होगा बैकग्राउंड में, राइट? या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट ही होगा। हर एक केस में अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इज बिकम्स क्रूशियल, राइट? अब पेटीएम में क्या है, पेटीएम में पेमेंट्स हो रहा है मर्चेंट और उसके बीच में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक बिहाइंड इट। जोमैटो में फूड डिलीवरी हो रहा है, कोई रेस्टोरेंट खाना बना रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कोई ना डिलीवर कर रहा है, राइट? ई कॉमर्स में कहीं सप्लाई चेन है, कुछ लोग आते हैं, ट्रक में डालते हैं, ये करते हैं, एक ग्राउंड लेवल पे कुछ चीजें हो रही है, राइट? इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क ऑन ग्राउंड लेवल ना, आप अपना प्रोडक्ट बेटर बना सकते हो, ये सबको पता है, ठीक है? आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी पता है तो आप प्रोडक्ट बेटर बना सकते हो। तो इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड वर्क, तो उनको लगता है कि यू विल बी एबल टू डू बेटर इन बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट, राइट? आपने ऑन ग्राउंड समझ लिया तो अब मैं प्रोडक्ट बेटर बना सकता हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग है, और ये होता भी है सच। तो अगर आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस है, फ्रीलांस, ये सब बिल्कुल मेंशन है। गुड कैट स्कोर, आई वुड से मतलब एमबीए में जाने के लिए तो 95+, 98+, बट 90+ है तो लिख दो, मतलब आई वुड से कैट स्कोर इज नॉट कवर्ड वेदर वी SQL, MySQL नहीं, इट्स ओके। सो यू वर्क टू नो SQL, इट इज ओके, सिमिलर होता है। आपने MongoDB में बहुत एक्सटेंसिवली काम करा है। MySQL आप बोल सकते हो कि MySQL नहीं करा है मैंने, आई वर्कड ऑन MongoDB, मैंने नो SQL पे काम करा है, व्हिच इज फाइन, इट्स ओके। जो हम सारी चीजें नहीं सीख सकते हैं, हमने जो सीखी है
उसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं. We want to be good in a few things that we've done. We can't be jack of all trades. Anil, so headstand Guinness Book of World Record लिख दो यार, but not in achievements. मतलब कहाँ पे लिखोगे? Achievements के section में लिख सकते हो, नीचे का achievement के section में, but this can't be the only achievement, right? It will be a fun thing to talk about, right? Anil Kumar कह रहा है कि so he was a part of a group Guinness Book of World Records जिनके स्कूल में हुआ था. I think it's a good thing. It's a good talking point to have, right? But इसको बहुत achievement में this could be a second, third achievement, not like the primary achievement. Okay. Internships in marketing, HR marketing and sales. अगर आपने internship करी है, you can mention. Yeah. So जहाँ पे हम job की बात करें तो वहाँ पे हम internship भी लिख सकते हैं. Yes, you can mention. And then you could say that, you know, आपका interest ही नहीं आया इस area में, that's why you wanted to move here. Yeah, आप लिख सकते हो. Last semester result is pending, which is fine. So मतलब you can write अभी तक का जो आपका CGPA है वो लिख सकते हो अगर आपको mention करना है तो, ठीक है. But which is fine. Last result का pending है तो होता है, बहुत सारे freshers के लिए last semester result नहीं आता है. Most of the jobs are, so when we were applying, we had results only for first 5 semesters. हमारा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से था, so 6 semester का result ही नहीं आता. 6 semester result आता था 7 semester start होना है तब. तो 5 semester ही पढ़ते थे लोग कि उसी के basis पे job लगेगी. 5 semester के बाद को पढ़ता नहीं था. So, but anyway, so it happens. They understand that last semester results will come late. Short-term internships, yes, if you've done Saswat, you should mention it. Okay. I think they're good. If you worked on certain, अगर आपने marketing automation पे काम किया है या कुछ किया है तो definitely mention करो, right? थोड़ा सा technical aspect ला सकते हो तो कोशिश करना. Digital marketing की ऊपर अगर बात कर सकते हो तो वो करना, ठीक है? Okay. Umesh, you can mention it. If you work this thing, I think this becomes not just a talking point, but yeah, you bring a different perspective to building something, right? So, हाँ, बिल्कुल mention करो. If you worked as artist director. So by the way, we have a professional actor and director among us, Unmesh. So absolutely लिखना Unmesh if you think आपने किया है. कुछ achievements highlight करने की कोशिश करना, right? Just don't write it blank because this is an interesting thing. तो कुछ अच्छी accomplishments highlight करने की कोशिश करना, ठीक है? Good. Any questions that I have missed? Anything that I have missed? Please, abhi पूछ लेना. You can unmute and ask if typing is a problem. मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो लोगों ने इतनी इंटरेस्टिंग डीपीज लगाई हैं, फोटोज लगाई हैं, कैसे करते हैं ये लोग? मैं तो बहुत खराब हूँ. आई कांट हैव फोटोज व्हिच आर गुड. तो लोग काफी क्रेजी फोटोज लगाते हैं. गुड यार, यू कैन पुट दिस एज अ स्किल कि बेस्ट डिस्प्ले पिक्चर इन द ग्रुप इफ दैट वाज एन अकम्प्लिशमेंट. नहीं, ठीक है दोस्तों. नो मोर क्वेश्चंस. Okay, good. चलो, good luck guys, ठीक है. I think we'll stay in touch, ठीक है. Good luck to you. One thing, एक चीज मैं बोलूँगा कि आज करना जरूरी है, ठीक है. It's if you were in Karnataka, then this would have been holiday, but you guys are not in Karnataka. तो आज Karnataka महोत्सव डे है, so we had to close our office today. But नहीं हो तो आज please complete the series today. Okay. Last question. Certificates on achievements. Certificates आपसे कोई मांगेगा नहीं, but questions जरूर पूछेंगे. So don't fake it.
Don't fake something which you have not done. Questions पूछे जा सकते हैं, but मतलब certificates को नहीं मांगेगा कि आप certificate दो, but if you have done something, some certification course, write it. People will ask questions. Just be sure about it. ठीक है. Yeah, someone will review the resumes, right? But do it अपना best version देना, ठीक है. One more day. See, एक वर्जन बना लो, ठीक है. आज रात तक बना के भेज देना है, ठीक है. एक वर्जन बना लो, and then if we think that it needs to be revised, then we'll send it. But the only thing is the earlier you send, the earlier we are able to share with the company, right? So I would request you to share as soon as possible. Okay. Ibrahim, you have a question, you can unmute. Asked one more. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon, Ibrahim. Sir, please give us some tips regarding salary negotiation. Okay. Salary negotiation. Yeah, देखो, one thing. So one, we will do, our representatives will do that negotiation on your behalf with the companies, right? But at certain times, you will also need to do that, right? आप इसमें ना बेस्ट होता है अपने आप को कि कहीं पे पेग कर देना, ठीक है. मतलब एंकर करो अपने आप को. अगर आप 7-8 मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, ठीक है. कैसे पैक कर सकते हो? वन, पहले लोग पैक करते हैं अपनी पुरानी सैलरी से. अगर अभी पुरानी सैलरी नहीं है तो मार्केट में कितना मिल रहा है, राइट? फ्रेशर्स को फॉर दिस कॉलेज, राइट? तो बोलो मेरे पियर्स फ्रॉम दिस कॉलेज हैव गॉटन दिस मच, हेंस आई एम आस्किंग दिस, राइट? बट आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करोगे और कंपनी नहीं देगी तो वो डील ब्रेकर भी हो सकता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच द कंपनी इज विलिंग टू पे, राइट? So when you get the opt-in form, you will know what is the company का range, right? Don't go beyond that range. Don't कहो कि नहीं यार मुझे इतना ही चाहिए, मुझे 15 ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपका जो भी है, right? Try to come within the range of the company and then say that I am asking this because मेरे peers को इतना मिल रहा है या फिर इनको इतना मिल रहा है, right? Just don't say कि मेरे को इतना चाहिए. Have a reason behind it, right? We will also do it, right? But have a reason behind it कि मेरा पास इतना था, मेरे peers को इतना मिल रहा है, या फिर I have to इतना standard of living तो इतना चाहिए, मैं हमारे खर्चे इतने हैं, मेरे EMI इतना है, तो this much is what I have in mind, right? But there has to be logical backing behind whatever number that you negotiate with. ठीक है? That's how you negotiate. But we will also do on our behalf. ठीक है? Got it, sir. Shashwat. Hello, sir. Am I audible? Hi. Yes, you're audible. Hello, sir. Good afternoon. Yeah. Sir, my question is, if I'm getting, for now, I'm not getting any questions, but while building my resume, if I get any questions, then can I connect with someone from Function Up, or if I can connect with you to clear my doubts? Yeah. Right. So इसके लिए काम करते हैं. So maybe Hariom or maybe the guide, probably not. But okay. So एक form कर लेते हैं on the doubts that you have. ठीक है. Yeah. And I will look at those doubts. Okay. If I'm able to send it on a text or email, वो मैं कर लूँगा. Otherwise, what I'll do is I'll do a separate session on these doubts. ठीक है. या मैं आपको audio note कुछ कर दूँगा. ठीक है. We'll do this. Sir. And sir, I have one more question. While making salary negotiations, if I have a prior offer in hand with me, then shall I mention that prior offer in hand? While but prior offer, do mention it to the function of team. Otherwise, वो बहुत हो जाता है कि आपने बताया नहीं. Because what we tell the companies is that you guys will be able to join immediately, right? And you are interviewing here. If you are interviewing other places, we will tell you, ठीक है? But बता देना, ठीक है? And yeah, it's a good technique to say that I have another offer of from so and so companies, and that is the offer. So companies might say, ठीक है, जाके ले लो वो offer, ठीक है? मतलब then it has to be a genuine this thing, right? It can't be a fake offer. Okay. ठीक है? But बोल सकते हो. But do keep function up team in loop if you have offers, etc. Because then what happens is then our conversation with the companies becomes very different. ठीक है?
हम बोल सकते हैं कि यार इसका ऑलरेडी ऑफर है, देन यू हैव टू थिंक इट इन सच सो एंड सो वे. अदरवाइज कंपनी से दैट यू नेवर टोल्ड अस दैट दिस कंपनी गाइस इंटरव्यूइंग एट अदर प्लेसेस. सो हमारे लिए फ्यूचर में खराब हो जाता है. Okay, sir. हाँ, सो प्लेसमेंट्स का मैंने बता दिया, तो कंपनीज की शीट नहीं आती है. देयर इज ऑन अ डेली बेसिस देयर आर कंपनीज दैट कीप कमिंग इन. सो यू विल गेट ऑप्ट-इन फॉर्म ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, राइट, एंड ऑन ईमेल. जस्ट स्टे एक्टिव, ठीक है. आप ऑप्ट इन करोगे, उसके बाद वी विल शेयर द रिज्यूमेस विद द कंपनीज. The companies will then shortlist that, okay, these are the companies, these are people who have applied. Now I will shortlist. So they send us a shortlist. From that shortlist, the next screening or other things will happen, right? So it takes about a day when you send opt-in, the company shortlist, and then the screening, etc. happen, right? So that is the process that will follow, right? We'll not be able to share a list, right? Because कुछ companies, जैसे हमने for example last महीने बात करी है, they are not hiring immediately, but there are some other companies that are hiring now, right? So we'll try and get those companies to interview. So it's an ongoing process, right? And whoever is as of interviewing now is hiring now will be coming to hire from you, right? And we do multiple things, right? So to do this, but follow the process so that you are able to apply timely. ठीक है. Expectations as a fresher, see, मैं अभी expectation एक number नहीं बोलूंगा because it is completely dependent on the company, right? If you have done very well on DSA, then you expect much higher salaries, right? But it is absolutely dependent on the company. Location, etc. पे depend करता है, ठीक है. I will not be able to say. People have cracked 24, 18, 14. People have cracked 5, 4.5 also, right? बहुत बड़ा range है. So I can't say what to expect. It is only dependent on you and the company, right? We will ensure that all of these opportunities come along your way. Okay. ठीक है. Okay. CV template. So 3 things. Okay, we'll share the CV template, soft skills के words भेजने, and in case you still have doubts, we'll float in a form so that you can share your doubts on CVs. Okay, but बहुत ज़्यादा doubt होना नहीं चाहिए, पहले बनाया होगा, but अगर कुछ होता है तो आप कर लेना. I'll be able to answer those questions. ठीक है. Good है यार. ठीक है guys. Hariom, are we here? Can we? Yes, sir. Yeah, so we can end this, or if you want, if they have another lecture, they can continue. ठीक है. चलो, thank you guys. Nice talking to you. Thanks everybody for joining in. Okay. Good luck, guys. Okay. Bye. Hi everyone. गाइज मैं 2-3 पॉइंट थोड़ा सा ठीक है यार. एक बार सारे लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? एक बार मैं फोटो ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट. मैं खुद सोकर उठा हूँ. एक मिनट. ठीक है. थैंक यू गाइस. यार मैं ना 2-3 चीज आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ. मैं ना अभी क्या करूंगा, आप लोगों के साथ में एक रिज्यूम सबमिशन लिंक भेजूंगा. कल तक आप लोगों को सबमिट करना है रिज्यूम, क्योंकि जितना जल्दी आप सबमिट करोगे उतना प्लेसमेंट अभी स्टार्ट होने वाली है. मतलब ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है हमारी साइड से, ठीक है. और 2 चीज आपको हमेशा लाइव कोडिंग और आपके ना हाईफ्लिक्स होने चाहिए, क्योंकि हाईफ्लिक्स पे आपकी कम्युनिकेशन होती है. वो हो सकता है कंपनी को भी सेंड करे, तो जिसका हाईफ्लिक्स सबमिट नहीं रहेगा तो शायद वो प्लेसमेंट्स के लिए मैं सीवी प्लेसमेंट टीम को नहीं भेजूंगा. दूसरी चीज, ठीक है. और आपको तैयारी करनी है. और इसके अलावा यार मैंने आप लोगों के साथ ना टेम्पलेट शेयर कर दिए हैं रिज्यूम से कैसे बनाने हैं, क्या करना है. तो आई डोंट थिंक कि बहुत सारे डाउट होंगे, ठीक है. आपको तो लिखना है खुद से आपने क्या क्या किया है, आप कितने अच्छे से लिखते हो और कितने मतलब
तो वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। एक बार सारे चीज सर ने बता दिए, भरत सर ने, तो उसको देखकर बनाना आप लोग, और कोई कुछ डाउट है तावड़ा। और ना यार एक ट्राई करना ना कि एक बार देखो, रिव्यू तो होते हैं, लेकिन पता है ना बच्चे इतने ज्यादा है ना कि हर लाइन टू लाइन मतलब किसी का रिव्यू करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, तो किसी का हो सकता है छूट जाए। तो मेक श्योर कि अपने इनसे कुछ मतलब ऐसा नहीं होना कि हाँ फंक्शनल रिव्यू करके देगा या तो मतलब हमारे साइड से होगा तब थोड़ा सा एरर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को मतलब 100% रिज्यूम सही होने चाहिए जैसे फॉर्मेट में। और यार ना आप लोग ना कोई भी पॉइंट लिख रहे हो सीवी में, तो उस पे एटलीस्ट ना आप 2 मिनट बोल पाओ। समझ में आ रही है क्या मेरी बात आप लोगों को? अगर आप सीवी में कुछ लिखते नहीं हो, अगर बोल नहीं पाते हो, तो जो इंटरव्यू को लगता है कि फेक है। आप समझ में आ रहे हैं क्या बात कर रहे हो? ऐसे कुछ भी लिख कर आ गया, ठीक है। तो मेक श्योर जो भी आप सीवी में लिख रहे हो, हर एक एक पॉइंट पे आप लोग 2 मिनट एटलीस्ट बोल पाओ। तो मतलब देख लेना सीवी अगर कैसे बनानी है, मतलब थोड़ा सा और सा अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। और नहीं यार मैं क्या किया ना कि अभी तक ना मतलब जो भी मेरे पास 1000 क्वेश्चन है, वो मैंने ना अपने टेक टीम को दिया था कि इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी मुझे एक शॉर्ट लिस्ट दो, जो मैक्सिमम मतलब थोरियम से, रेडियम से या यूरेनियम से, वो मैं क्वेश्चन दूंगा 20 25 या 30 जो भी होंगे, वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा कल तक। उसको एक बार अच्छे से देख लेना, और मैं गूगल फॉर्म अपलोड कराऊंगा आप लोगों के साथ, उसमें वो सबमिट कर देना। हो सकता है ऊपर उसमें बैकएंड के भी हो, जो कुछ भी हो, एक बार क्वेश्चन देकर सालों को सबमिट करने, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइज, मिलते हैं, चलो बाय। ठीक है, ठीक है गाइज, मीटिंग क्लोज करते हैं।